बर्तमान देखा जो गोटे करेन्ट क्यारिंग कंडक्टरटे मैग्नेटिक फील्ड भितर रखा ताले कौन हम तेणु आम जो गोटे करेन्ट क्यारिंग कंडक्टर को गोटे मैग्नेटिक फील्ड रखा कौन हम पे ना आम जाचु गोटे कंडक्टर को रखिलु मैग्नेटिक फील्ड भितर करेन्ट पास कले इलेक्ट्रॉन कौन करेंगे ना इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग करेंगे आम ऑलरेडी करेन्ट रे पढ़ी सारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन गुड़िक जितेबाला ड्रिफ्ट होती से फोर्स पड़ो कौ फोर्स ना से एक्सपीरियंस हे लॉरेंट फोर्स बा लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू वी वी एवं से फोर्स पड़ा द्वारा टोटाल फोर्सटा कौन हम ऑल इलेक्ट्रॉन कौन हो एड होगला जो फोर्सटा पड़ो से फोर्सटा नेट फोर्स पड़ो क्या ना कंडक्टर उपर जहाँफल कंडक्टरटा कौन हम डिफ्लेक्शन हम तेणु बा कंडक्टर उपर फोर्स पड़ो और कंडक्टर जब फ्री टू मूव हो से कौन कर स्टार्ट कर मोशन करने सो बर्तमान जब देखा देख तो दिस इज मेटल वायर so these are the atoms and you see तो ये केस कौन हम द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन तेणु आम इलेक्ट्रॉन गुड़िक गोटे डायरेक्शन गले करेन्ट प्रोड्यूस करेंगे तेणु जो आम कंडक्टर दिस इज द रैंडम मोशन जो electrons are drifted in different directions so electrons are freely moving these are called thermal velocity of the electrons एवं से माने बहुत हाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड रे मोशन करथांती एवं नेट वेलोसिटी से मानकर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है कहीं किए पॉजिटिव रे जाउछु किए नेगेटिव जाउछि डिफरेंट डायरेक्शन जाउथरो नेट वेलोसिटी 0 हो जिवो जाफरे से माने किछि करंट प्रोड्यूस करिवे नाही किंतु जेतबे आमे गोटे बैटरीटा कनेक्शन कर दबा बा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करबा बर्तमान एगुड़िक बर्तमान कौन हम स्टार्ट करेंगे इन वन डायरेक्शन सो माने वन डायरेक्शन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग सो दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस एंड दीज आर नेगेटिव दीज आर इलेक्ट्रॉन्स द ब्लैक स्मॉल स्फीयर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स सो इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली इन मोशन सो दीज ग्रीन्स दीज आर द एटम्स So, ये कौन हम देख द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो ये केस देख जदि आम गोटे एमती सो सिमिलरली दीज आर द सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी गोटे कंडक्टरटे आम करंट कैरिंग सब जहाँ गोटे एमती कंडक्टरटे आम रखिलु भितर एवं कंडक्टर सपोज द करंट इज फ्लोइंग आई सो दिस इज कंडक्टर पी क्यू एवं द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल लेंथ इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए तेना करंट फ्लो होची द इलेक्ट्रॉन्स इन द विदिन कंडक्टर मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी को वेलोसिटी कहते रे ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी so the force on each electron केते हबो the force on each electron F is equal to minus E into V cross B so this is the force on each electron let n is the number of free electrons per unit volume per unit volume of a conductor A is the area of cross section of the conductor and L is the length of a conductor ताले वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विल बी इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ सो द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी total number free electrons
within conductor is equal to A L into N. That is number of free electrons per unit volume into volume of the conductor. So it will be N A L. That से अनुसारे आमे देखिबा. So this is the number of the total force. So what will be the total force? So you see, so the total force will be, so total force on conductor due to all electrons, due to all free electrons केते हबरे is equal to F is equal to A L N into minus E into V cross B. So गोटे पाई एतिकी टोटल पाई एतिकी हे गला बा आमे एटा लिखि परिबा is equal to F is equal to A N E into this is Vd, drift velocity. The velocity is the drift velocity. NEVD into L cross B. Or that implies F is equal to I L cross B. So I, what is I? Now current is I is equal to NEA VD. Because here it is negative, so again it will be L, it will, because I mean that conduct current is flowing opposite to the amaro by electron is flowing opposite to the flow of currents. That is why if it will be minus, it will be plus, so it will be I is equal to NEA VD. So F is equal to I L cross B. So force on the conductor F is equal to I L cross B. So देखो this is I L B, where L is the vector of a magnitude 1 with the direction ID to the current. If where is any arbitrary shape, जदि arbitrary आमे shape नहीं थिबा ताले Lorentz force can be calculated as F is equal to DI cross by DL cross B, where DL is the small element of the conductor. So সেই অনুসারে আমি দেখিলু, সো আমি দেখিলু that is F is equal to আমি I L cross B. So what is the force or F is equal to, we can write I L B sin theta into n cap. So n cap means unit normal vector. So what is the direction of the force? Now direction of the force is perpendicular to both B and L. Conductor जो plane रही ची magnetic field जो गुटे plane रहिले ताले हमरो force ता प्रति perpendicular plane हबो according to cross product rule. तो से अनुसार n cap is the unit normal vector perpendicular to L and B. So what is the magnitude of the force? Force और magnitude केते हबरे ना is equal to ILB sin theta. बा ताको शॉर्ट फॉर्म मन रखिया पई ताको लेखा जाय मिते हमरो बिल sin theta, बिल sin theta. आमे बिल sin theta को आमे कहिले ताको आमे शीघ्र भलो भाबरे मनर रखि पारिबा. बिल आमे जो देखु बिल बिल BIL बिल sin theta. So theta is the angle between B and L, and similarly when theta is equal to 0 degree or 180 degree, then sin theta is equal to 0. sin theta 0 हो गले फोर्स टा कोन हे जिवो रे, therefore force is equal to 0. जदि फोर्स टा 0 हो गला ताले कोन हबो ना कंडक्टर ऊपरे आ किछि फोर्स पड़िबो नाही. ता माने जेतेबेले गोटे कंडक्टर टे पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आमे रखि दबा, एमदी मैग्नेटिक फील्ड सहित पैरेलल करि के रखि दबा, कंडक्टर ऊपरे किछि फोर्स पड़िबो नाही. तो सेमिति कंडक्टर ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. आउ जेतेबेले थीटा टा जेतेबेले आमे 90 डिग्री एंगल करि के रखि दबा ताले सेई केसरे फोर्स टा कोन हबो, इट इज मैक्सिमम फोर्स पड़िबो इज इक्वल टू BIL बिल. सो हियर मैग्नेटिक फील्ड एवं
the conductor are perpendicular to each other. So this is the magnetic field. तापर देखिबा हमें मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड. तेणु बर्तमान आम देखा गोटे चार्ज पार्टिकल जितेबाला गोटे मैग्नेटिक फील्ड भितर जाऊँगी. बर्तमान आम कौन देखा तार पाथटा कौन हम देखा से केस आम देखा डिफरेंट जितेबाला चार्ज पार्टिकलटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाऊँगी. अलरेडी आम देखी कही सारू जो चार्ज पार्टिकल जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जीव तापर किसी फोर्स पड़ो ना एवं से कौन कर फोर्स पड़ो माने नहीं माने नेट भैल्यू जो दिगरे जाऊँगी से भाया से ट्रांसलेटरी मोशन बा लिनियर गोटे सीधा लाइन जो दिगरे जाऊँगी से दिगरे जीव. किंतु जितेबाला जदि फोर्सटा 90 डिग्री एंगल हो पड़ो देख जो कनसीडर बर्तमान यही केस कौन हम चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो चार्ज पार्टिकल जितेबाला परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जीव से केस आम देखा कौन हम. बर्तमान देख 3टा पॉइंट से कनसीडर कर ए बी सी एवं ए बी सी समस्त देख दीज आर द वेलोसिटीज एंड डिफरेंट डायरेक्शंस. तेणु बर्तमान आम ए पूर्वर आम ये देखा पूर्वर आम देखा गोटे जोटा कि लॉ कौन जानापी ना आमर गोटे कंडक्टर जो करेन्ट पास कर तार कंडक्टर उपर कौ दिगरे फोर्स पड़ुची ताकू जानापी आम आइदर राइट हैंड थंब रूल यूज कर आउ गोटे रूल कहते फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कौन ना आम कौन करवा ना आम बाम हाथ रे बा लेफ्ट हैंड रे थंब फोर फिंगर आउ मिडिल फिंगर को एमती आम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन स्ट्रेच करवा से माने परस्पर परपेंडिकुलर होकर रहिबे 90 डिग्री एंगल करके रहिबे. रहिला जदि आमर यही फोर फिंगरटा इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउ मिडिल फिंगरटा इंडिकेट करिवो डायरेक्शन ऑफ करेंट देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बा फोर्स तापर जो फोर्स पड़ो तार डायरेक्शनटा देखेबो. सो दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एटा को आम कहीपर फादर मदर चाइल्ड. फादर माने फोर्स मदर माने मैग्नेटिक फील्ड चाइल्ड माने करेंट. करेंटा जदि आमर मिडिल फिंगर हम फोर फिंगर जदि आमर मैग्नेटिक फील्ड हम ताले थंब रे फोर्स पड़ो थंब डायरेक्शन ले फोर्स पड़ो. दैट मीन्स द कंडक्टर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द थंब. से अनुसार आम यहाँ देखु दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिस इज द करेंट डायरेक्शन. Suppose a charge particle moves in the direction in the magnetic field. This is the magnetic field perpendicular to the plane of the paper. एवं गोटे चार्ज पार्टिकल आमर एमती धर गोटे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आम छाड़ीदबा से कौन कर गोटे सर्कुलर पाथ रे मोशन कर कहीं ना आम देखा जो मोशन कर आम फ्लेमिंग्स जदि आम लेफ्ट हैंड रूल आम पकईदबा सो यू सी दैट सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ले करेंट प्रवेश करे एवं मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड. सो फोर्सटा कुआडे पड़छ ना फोर्स इज इनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर पड़ो. फोर्स इज अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एवं सेंटर आड़ को जो फोर्स पड़े ताको से कौन करे ना इट प्रोवाइड्स सेंट्रिपिटल फोर्स. तेणु बर्तमान कौन करे जो मैग्नेटिक फोर्सटा पड़ुची चार्ज उपर से कौन करिवो ना ताको सेंट्रिपिटल फोर्स दब चार्ज पार्टिकल उपरे सो दैट द चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ ए सर्कुलर पाथ विद इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो आम देखल दिस इज तेणु आमर मैग्नेटिक फोर्स कौन प्रोड्यूस कला. सो मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी बिकज थीटा ये केते डिग्री ऑलरेडी आम जानचु 90 डिग्री बिकज हियर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड. In this way, this is the magnetic field, and when charge particle Q moved perpendicular to magnetic field, you see velocity is perpendicular, so angle is 90 degree. So immediately the charge particle, and when it enters, just enter, it changes its direction and moves in a circular path. So here at every point we see that this is the velocity
this is the force. So here it is the velocity. Velocity is always tangential, force is towards the radial. So tangent direction le velocity gala ebong radial digare magnetic field produce. এই অনুসারে magnetic force তাপরে পড়িলা এবং this force কোন কলা তাকো centripetal force provide কলা তো centripetal force পড়লা মাত্রে কোন হবো না F is equal to mv square by r. So at equilibrium qvb is equal to mv square by r. qvb is equal to mv square by r. Or that implies, so qb or that is r is equal to, you see that is v cancel, so r is equal to am likhi pariba mv by q into b. So this is the radius of the circular path. তাহলে so what is the time period? কারণ আমি জানছু time period of revolution of the circular path t is equal to distance by velocity. Time is equal to আমি জানছু distance by velocity. So what is the distance travel for one complete rotation? কেতে জীবনে না is equal to 2 pi into r. আউ তার velocity হচ্ছে v. তাহলে বর্তমান 2 pi r, r টা কেতে দেখো mv by qb, that is 2 pi mv by qb into v. So v cancel হয়ে গলা, তো আমি পাইলু is equal to 2 pi m by qb. তখন আমি দেখলু দেখো the time period is independent of velocity কিংবা radius of the circular path. Only কাহাকা উপরে ডিপেন্ড কলা না mass of the charge particle আও charge of the charge particle উপরে ডিপেন্ড কলা এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড উপরে ডিপেন্ড কলা এবং সেই অনুসারে তার ফ্রিকোয়েন্সি অফ রিভলিউশন পাইবা ফ্রিকোয়েন্সি f is equal to reciprocal of time period, so is equal to q b by 2 pi m. So this is the frequency. So in this way the charge particle moves in uniform circular motion with the uniform value of uniform speed. So it will be circular path. The charge particle move in a circular path. So যেতবেলে আমি দেখিবা when the charge particle is projected perpendicular to the, so making a certain angle theta to the magnetic field. এটা আমি দেখিলো perpendicular direction লে যেতবেলে আমি দেখিবা when charge particle is moving making certain angle with the magnetic field. তাহলে এই কেসে কোন হবে দেখো so this is the amaro magnetic field b. Suppose a charge particle projected with the velocity v making angle theta with the magnetic field. तो जब आमे चार्ज पार्टिकल टा की q टा को आमे प्रोजेक्ट करिबा तन से केस रे कोन हबो ना वेलोसिटी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स. इट विल बी पैरेलल कंपोनेंट विल बी v cos theta and perpendicular component will be v sin theta. v sin theta. तर वर्तमान देखो the parallel component velocity is acting along the magnetic field. तो आम जानिचु पैरेलल कंपोनेंट भीतर वेलोसिटी आ बी भीतर एंगल केते डिग्री हे गला 0 डिग्री हे गला. सेति पई हमर ए पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी जोगु बा हमर कंडक्टर चार्ज ऊपर किछि फोर्स पड़िबो नाही. जाफरे हमर से केस रे तार नेट फोर्स 0 होइतिबारु तन ड्यू टू दिस पैरेलल कंपोनेंट द चार्ज पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. तापरे कोन हबो ना आउ आसिला तापरे के ना हमर परपेंडिकुलर कंपोनेंट तन v sin theta टा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो आम देखिलु परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे जदि मैग्नेटिक फील्ड रो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जदि चार्ज पार्टिकल को मोशन करेबा ताले से कोन हबो ना सर्कुलर पाथ करिवो. तो एई केस रे कोन हबो ना हमरो v perpendicular component provides necessary centripetal force, that is m v perpendicular square by r is equal to q v perpendicular b, because theta is equal to 90 degree, q v b sin theta sin 90 is equal to 1. Therefore I am paiba what is, that is r is equal to m, so r is equal to m v perpendicular by qb. ताले सेमिति तारो टाइम पीरियड कोन हबो t is equal to 2 pi
r by v perpendicular, so is equal to m, that is 2 pi m by q into b. देखो टाइम पीरियड मध्य से रहा ताले कौन हम ना मैं चार्ज पार्टिकलटा बर्तमान कौन है ना साइमल्टेनियसली चार्ज पार्टिकल आमर इट इज एक्टेड अपन बाय ए इट इज साइमल्टेनियसली टू टाइप ऑफ मोशन दुईटा मोशन एक कर गोटे है ट्रांसलेटरी मोशन आ गोटे है सर्कुलर मोशन बा रोटेशनल मोशन एवं दुईटा मोशन जो कंबाइन हो गला पर से कौन कह मोशन इज कॉल्ड हेलिकल पाथ तेणु चार्ज पार्टिकलटा कौन कर से कौन कर ना रोटेट कर आगू जाऊ रोटेट कर एमती आमर से रोटेट कर चलो आगू को चलो रोटेट कर आगू को चलो सो यहाँ कहते हेलिकल पाथ दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ बाता कहती स्प्रिंग लाइक पाथ तेणु चार्ज पार्टिकलटा आमर स्प्रिंग लाइक आगू को जीव एवं जो जीव से समय आमर देखा गोटे क्वांटिटी कहते पिच ऑफ द हेलिक्स व्हाट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स पिच ऑफ हेलिक्स माने कौन ना इट इज द लिनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इट इज द लिनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इन सर्कुलर मोशन तेणु जिते सर्कुलर मोशन ले थरे कंप्लीट सर्कुलर मोशन थरे कंप्लीट होची लिनियर मोशन केते डिस्टेंस ट्रैवल करूची जेतिक डिस्टेंस ट्रैवल कला सेटा कहती तार पिच ऑफ द हेलिक्स ता माने कौन ना डिस्टेंस इज इक्वल टू आम जानिचु वेलोसिटी इनटू टाइम तेणु यही दिगरे तार वेलोसिटी है कौन सो द पिच इज इक्वल टू कौन हम पिच ऑफ द हेलिक्स इज इक्वल टू सो पिच ऑफ द हेलिक्स इज इक्वल टू v पैरेलल इनटू तार टाइम पीरियड डिस्टेंस इज इक्वल टू पिच है x सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम सो v पैरेलल इज इक्वल टू केते ना v cos थीटा इनटू टाइम है आमर टाइम पीरियड है 2 pi m by qb so this is called pitch of the helix so এই केस रे so charge particle moves in a helical path जेते आमे certain angle करिकि magnetic field भितर चार्ज टाको प्रोजेक्ट करिवा so देखो 2 pi nu is equal to 2 pi so time period of one revolution t is equal to 2 pi by omega but 1 by nu is equal to 2 pi m by qb so the pitch is equal to v parallel into 2 pi m v parallel into qb so the radius of circular component of the motion of charge particle now the MCQ question देखो रे पिला केतटा the radius of the circular component of a motion is called the radius of a gyration the radius of a helix pitch of a helix and the correct is radius of a helix so magnetic force acting on conductor will be maximum if angle theta between the length of the conductor and magnetic field is 90 degree because 0 degree ले force टा 0 होबो because f is equal to bill sin theta आमे जानचो sin लो value maximum at angle 90 degree so it will be 90 degree the force acting on a conductor placed the magnetic effect of electric current is given by f is equal to I L cross B. So, I L cross B. So, it will be all F I L cross B because all are vector form. Here it is a scalar, here L is a scalar, but here all are vector because it is a vector product. But force is a vector, so L is a vector and B is a vector, so it is a vector product. So, the correct option is F I L cross B. Okay, thank you.